हेलो एवरीवन। आज हम साइंस वन का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ लेंसेज ये पढ़ने वाले हैं। सो इस चैप्टर में हम ना व्हाट आर लेंसेज, देन लेंसेज कहाँ पे यूज़ होते हैं इन अ एवरीडे लाइफ, देन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स विच आर देयर इन ह्यूमन आई, हम वो डिफेक्ट्स को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, ऑल दिस टर्म्स, देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, ऑल दिस थिंग्स वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। Okay, so now the definition of lenses. So a lens is a transparent medium bound by two surfaces. एक transparent medium रहता है which is bound by two different surfaces that is called as lenses. अब दो अलग अलग टाइप के लेंस रहते हैं that is convex lens and concave lens. Okay, so in convex lens the spherical surfaces are puffed outwards. Okay, and in case of concave lens the spherical surfaces are curved inside. ओके, अगर आउटवर्ड्स कर्व होगा देन दैट विल बी कॉन्वेक्स लेंस, एंड अगर इनवर्ड कर्व होगा देन दैट विल बी कॉनकेव लेंस. So these are the different terms which are related to lenses, that is principal axis, optical center, focal length, and सबके definition दिए हुए हैं. So principal axis, the imaginary line passing through both center of curvature and the principal axis. Lenses के center से जो एक imaginary line pass होती है that is called as the प्रिंसिपल एक्सिस. देन ऑप्टिकल सेंटर, दो लेंसेज जो कर्व्ड इनवर्ड या आउटवर्ड है वो दोनों लेंसेज का जो सेंटर पॉइंट रहता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर. एंड फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ. The next term is center of curvature, radius of curvature, then principal focus of convex lens and principal focus of concave lens. So center of curvature, the center of spheres whose part form surfaces of the lenses. That is वो जो lenses का part है वो किसी sphere का एक छोटा सा part है. ओके, तो sphere का center that will be called as the center of curvature, and वो sphere का जो radius होगा that will be called as the radius of curvature. So principal focus of convex lens and concave lens, whenever light rays are parallel to the principal axis, most of the images they formed at the point of at the principal focus. Okay, in case of convex lens as well as in case of concave lens. But in case of convex lens, so convex lens are converging lens, so they converge the light rays at one particular point, and that point is called principal focus of convex lens. And in case of concave lens, they are diverging lenses, so they diverge the light rays from one particular point, and that is called as principal focus of concave lens. ओके, जो भी टर्म्स हमने पढ़े थे यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है वो सभी टर्म्स. ओके, ऑप्टिकल सेंटर वी कैन सी ये दो लेंस का जो सेंटर पॉइंट रहता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर. देन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सी इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो स्पीयर का वो पर्टिकुलर लेंस पार्ट है, the center will be called as the center of curvature, and the radius of that particular sphere will be called as the radius of curvature. The imaginary line which passes between the center of curvature and the optical center, that is called as the principal axis. And the distance between the optical center and the principal focus, जो P1 and P2 लिखा है, that will be the principal focus. So the distance between the optical center and the principal focus is called as the focal length. Now if we want to draw ray diagrams for concave lens as well as for convex lens, we have to follow certain rules. So यहाँ पे rules दिए गए हैं for drawing ray diagrams. First rule is when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus. Then second rule, when the incident ray passes through the principal focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. And the third rule is when the incident ray passes through the optical center, the refracted ray traces the same path. ये तीनों rules हमने पहले mirror के लिए भी पढ़े हैं in earlier grades, and now we are studying these rules for lenses. So इस diagram में हमको rule number 1 दिख सकता है. When the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the focus. It can pass through the left focus or to the right focus, but the refracted ray will pass through the focus. Here we can see rule number 2, that is when the incident ray passes through the principal focus, the refracted ray is parallel to the principal axis.
ओके मतलब जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी एट दैट टाइम द रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये फर्स्ट रूल का वाइस वर्सा है. And this is the diagram for third rule, that is when the incident ray passes through the optical center, the refracted ray traces the same path. That is in case of when the rays passes through the optical center तब refraction 0 रहता है. Okay, straight line में वो rays pass हो जाती है. So now we'll be studying sign convention for lenses. हमने पहले sign convention for mirror पढ़ा है in earlier grades. Sign convention for lenses are quite similar. Okay. So the objects are always placed on the left side of the lens. All the distances parallel to the principal axis are measured from optical center O. That is अगर हमको distance measure करना है, the origin, the center point will be the optical center and object हमेशा left side पे रहेगा. Then distances towards the right are taken as positive and distances towards the left are taken as negative. Okay. अगर वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है एंड इफ इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन देन इट इज़ टेकन टू बी पॉजिटिव एंड इफ इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन देन इट इज़ टेकन टू बी नेगेटिव. दैट मीन्स द height above the principal axis are taken as positive and height below the principal axis are taken as negative. Last point is important, that is the focal length of convex lens is positive. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है एंड कॉनकेव लेंथ की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहती है. ओके जब भी हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव पुट करेंगे एंड कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ हम हमेशा नेगेटिव पुट करेंगे. ओके नाउ दिस इज़ द लेंस फॉर्मूला जिसमें हम वो सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं. सो लेंस फॉर्मूला इज़ 1/v minus 1/u is equal to 1/f. ओके हियर u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है ऑप्टिकल सेंटर से. v इज़ द इमेज डिस्टेंस. इमेज कितनी दूरी पे फॉर्म हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से. एंड f इज़ द फोकल लेंथ. ओके एंड सेकेंड फॉर्मूला इज ऑफ मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन इज h2/h1. h2 इज हाइट ऑफ इमेज and h1 is height of object. So magnification is equal to h2/h1 which is equal to v/u. That is distance of image upon distance of object. Magnification के लिए हमें height given है या distance given है. Accordingly we have to put the values and we can get the magnification of that particular image. Okay, so for homework you have to write all the definitions which are mentioned in the presentation. Okay, and you have to submit your homework by today itself. Thank you.